guys, welcome to the lecture of Vocabulary 1. Now, vocabulary means the words, the power of words. कौन से शब्द का क्या मीनिंग है, उसे कब यूज किया जाता है, उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, all of that is nothing but your vocabulary. Now we are going to study how to retain a new word. अभी जो पुराने शब्द है वो तो हमें आते हैं, but when you study some new word, how are you going to remember it? So there are सबसे पहले before even moving on how to understand why, what is the reason that we have to remember these ocean of words. Number one, vocabulary improves your communication. So it helps you able to choose words with greater precision. What happens is when you do not know the apt words, you will just use I'm very tired, I'm very this, I'm very that. That's the reason. The reason is that you do not know which words to use there. So vocabulary often makes your communication simpler. Secondly, vocabulary opens up your mind when you don't know words. You just shut down on new insights or lines of reasoning. Vocabulary helps you improve on that. And third, most important, it helps you get results because it is a part of a syllabus and it's important. So professional success also entirely depends upon thinking and communication skills. Now, how to improve your memory and retention? So before that, understand the functions of the words. The functions of every word is to write, to speak, and to think. Now, when I say to speak, it means to learn the correct pronunciation. How are you supposed to pronounce a word? Is it pronunciation or is it pronunciation? Which means the spelling of the word. And lastly, where exactly is the word used? How to use the word, with what can you pair it, and what is the right context to use the word. So these are the three functions of vocabulary. Now that you have understood the basics, let us try a couple of questions. Now, the first type of question that we are going to try is odd one out. Obviously, you know what odd one out is. You have done it in the school. Here, we are going to do the same thing but with a little bit of complex words. So the first question is on your screen. Now, couple, sever, rend and lacrate, slash. What do you think will be the odd one out here? The answer is couple. Couple means to bring together. The rest of them mean to cut or tear apart. Next, quell, suppress, allay, pacify, ruffle. The answer here will be ruffle. Ruffle means to cause trouble and everything else means शांत करना. किसी चीज को शांत कर देना is nothing but your suppressing anger or allaying or pacifying. Third one, I'm pretty simple. It's very easy. The answer will be cease. Cease is to stop and everything else is to start. Now the next one here means hub. Hub is the central part of something. So as we say, Bangalore is the hub for IT industry. But bring, threshold, verge means the upper limit of something. Next, obloquy. Obloquy is an abusive language and everything else means to praise. So guys, whenever you come across a new screen, pause it, पहले खुद सोचो, आप अपना आंसर फाइनलाइज करो, आपको क्या लगता है, एंड तुक्का मत मारो, एकदम अच्छे से सोचो whatever you think, and then you can restart the video and see or resume the video and see कि exactly answer क्या था and what was the difference. Now here the answer will be clamorous. Clamorous means noisy. Everything else means to stay silent or calm. Seventh is scarce. It is an adjective, whereas everything else is an adverb. So I hope you realize it's not just about the meaning. It can also be the type of words they are. Sometimes there can be homophobes that can be used, which means words that sound similar. Example, blue. Blue is the color, and blue. Blue is also to blow something. Red is also a color, and I can also say that yeah, I have read that book. So red, red. So for odd one out, the words can be anything, the reasoning can be anything. It does not always have to do with the meaning. It can be absolute anything. You have to train your mind to think out of the box.
The next up is analogy. Now, what is analogy? In analogy, you are supposed to find out the relationship between two words and apply the same relationship to the options. And whichever option follows the same relation, that is your answer. So now here, limpid means clear and murky means foggy. So clear and foggy. Now that I have given you the meaning, think about it. What is the relationship between the two? Yes, it is antonyms. So if they are antonyms, what else is antonym in the options? It is bright and gloomy. Bright is a well-lit room, gloomy is a dark room. And these are the meaning of the other words that you may not know. Please take that down. Okay. Now, ease and elevate both are synonyms. Both mean to ease out something. So, question and interrogate is also synonymous here. Next is secret and clandestine. Secret and clandestine are both synonyms again. So what else is the synonym? Covert and stealthy. Overt is something that is openly done. Covert is something that is done secretively. So you might have heard this that it's a covert operation, it's a covert mission. So that is what covert means, secret. Yes. What do you think will be the answer to these two now? Okay. So, how do we answer this? Drama देखने audience आती है. Now see, drama and audience are neither synonyms nor antonyms. So how will you finalize this answer? तो आपको एक relationship statement बनानी पड़ेगी. ड्रामा देखने ऑडियंस आती है, वैसे ही गेम देखने स्पेक्टेटर्स आते हैं. ओके, सो आंसर विल बी गेम स्पेक्टेटर्स. वैसे ही बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोरेज मतलब फ्लोर्स. तो इसमें देखो, stream is not made up of rivers, right? River is made up of stream. That is why वो आंसर नहीं हो सकता. सेंटेंस में एडजेक्टिव तो आता है, बट क्या सेंटेंस सिर्फ एडजेक्टिव से बनता है? नहीं. ट्री जो है वो सिर्फ स्टेम से बनती है क्या? नहीं. राइट, सो अगेन दैट आल्सो कैन नॉट बी योर आंसर. एलिफेंट टस्क से तो नहीं ही बनता. टस्क इज अ पार्ट ऑफ एलिफेंट. सो बुक जो है वो चैप्टर्स से बनता है. बुक में क्या होते हैं? सिर्फ चैप्टर्स होते हैं. सो दैट इज व्हाई आंसर विल बी बुक चैप्टर. तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, एंड दैट विल बी योर आंसर. Now, now that you have understood analogy, we are going to try something slightly different. Now, we are going to solve the least similar in analogy. Now, when I say least similar, it means कि आपको analogy के अंदर ही odd one out try करना है. Let us understand this. जैसे germane and pertinent है. Okay, germane, pertinent both mean an integral part of something. तो both are synonyms. Now, हम क्या करते थे कि हम ऑप्शन में सिनोनिम्स ढूंढते थे. अब आपको लीस्ट सिमिलर ढूंढना है. मतलब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सिनोनिम ना हो. तो इट इज लाइक एन ऑड वन आउट इनसाइड एन एनालॉजी. तो अभी ऑप्शंस में सारे सिनोनिम्स होंगे, एक होगा जो सिनोनिम नहीं है और आपको वो आंसर ढूंढना है. सो एक्ट चीज ही अप्रोप्रिएट होती है. जो चीज हम क्विकली करते हैं मतलब वो अर्जेंट है. डल इंसान मतलब भी स्लगिश इंसान. एंड फास्ट एंड बर्लेस्क्यू का मीनिंग इज मॉकरी और स्पूफ ऑफ समथिंग. सो आंसर यहाँ पे विल बी एक्साइटेड एंड सेरन. एक्साइटेड एंड सेरन आर opposites. Okay, next, try this out. सेल जो है, शिप जो है वो सेल की वजह से आगे बढ़ती है. एरोप्लेन प्रोपेलर की वजह से आगे बढ़ता है. बलून हाइड्रोजन की वजह से उड़ता है. कार एक्सेलरेटर की वजह से आगे जाती है. बर्ड विंग की वजह से उड़ता है. बट सैटेलाइट जो है वो रडार की वजह से नहीं उड़ता, रडार पे उड़ता है. दैट इज व्हाई द आंसर विल बी सेकंड. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. कॉस्मिक एंड यूनिवर्स. नाउ कॉस्मोस और यूनिवर्स जो है वो सेम चीज है. ओके,
So it's like a root word. Now terrestrial मतलब ही earth, lunar मतलब ही moon, annular मतलब ही ring and child मतलब ही juvenile. Connubial is marriage and marriage मतलब youth नहीं होता. So answer will be third. Next, dog belongs to the canine family. Cat belongs to the feline family. Cobra belongs to the serpentine family. Fox belongs to the porcine family. Horse belongs to the equine family. Parrot does not belong to the aquiline family. Hence, the answer will be 2. Now, xenophobia मतलब ही fear of foreigners. Triskaidekaphobia मतलब fear of the number 13. Anglophobia मतलब fear of Englishmen. Bibliophobia is fear of books. Hemo is blood, so hemophobia is fear of blood. Claustrophobia is not fear of height. Claustrophobia is fear of closed spaces. That is why answer will be fifth. Next we are going to solve fill in the blanks. ये आपने स्कूल में भी किया रहेगा, just that the words might be a little bit difficult here. So the first one, football evokes a dash response. Now, what type of response does football evoke in India compared to cricket that almost dash the nation? तो cricket almost dash the nation. तो क्या नहीं आ सकता? देखो, grammatically cricket boiling the nation it's grammatically wrong. Boils होता तो फिर भी चलता. वैसे ही fascinating the nation ये भी गलत हो जाता है. genuinely fascinates the nation ये भी grammatically wrong है. So ये तीन grammar के वजह से चले गए. Now football evokes a dash response. So answer यहाँ पे unenthusiastic response नहीं आएगा because if you know इंडिया में और हम इंडिया की बात कर रहे हैं in the sentence तो इंडिया में फुटबॉल को एकदम ही लोग भाव नहीं देते ऐसा नहीं है राइट. फुटबॉल में लोग देखते ही नहीं ऐसा नहीं है. सो आंसर यहाँ पे लूकवार्म आएगा. लूकवार्म मतलब क्या? फुटबॉल के लिए ओके ओके रिस्पॉन्स होता है दैट यू नो people like football but not as much as cricket, but not that they don't like it at all. So football evokes a lukewarm response and cricket electrifies the nation. So that's going to be your answer. Chalo, try the next one now. Social studies, science matters, blah 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 blah, are few of the important areas. Okay, यहाँ पे आंसर आएगा important areas for the formation of proper emotional reactions. Try this one. When children become more experienced, they can gain meaning without making. Now understand the meaning. Oral का मतलब होता है sense of hearing. Okay, तो sense of hearing sounds तो नहीं आएंगे. Audible is capable of being heard. This can be your answer. Intelligible is capable of being understood. Sounds that you can understand. Acoustic is science of sound. आंसर या और वोकल तो आपको पता रहेगा. वोकल मतलब जो बोल पाता है. तो आंसर यहाँ पे आएगा ऑडिबल साउंड. Try the next one. Learning is more efficient when it is fun and it is less efficient when it is drudgery. Okay, so answer यहाँ पे fun and drudgery आएगा. चलो, next, try the next one. Now, rulers who are formed by minority तो चल जाता but large class of subjects who are uncivilized. तो अभी हम civilized country में रहते हैं, हम क्या uncivilized है क्या? So वो नहीं आएगा. We are not even crusaders. We don't rule. Democratic, undemocratic भी नहीं. So answer will be corrupted by too much power and corrupted by too much passive obedience. Next, simple arithmetic tells us that there is more of imitation. Now implausibility is incredibility. तो simple arithmetic ऐसा कुछ incredible वगैरह तो नहीं होता. Improvisation
ही नहीं है, which means that you have to work on it. इम्प्रैक्टिकल तो नहीं होता। इम्प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के वर्ड्स देख के आपको लग सकता है कि ये मैथमेटिक वर्ड्स है, ये हमने देखे हैं, बट दैट डजंट मीन दैट आप मैथमेटिक वर्ड है इसलिए उसे यूज करो। सिंपल अरिथमेटिक हमें इम्प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पता था, सो आंसर यहाँ पे आएगा फिफ्थ। इट टॉक्स मोर अबाउट इमिटेशन एंड लेस अबाउट इनोवेशन, मतलब उसमें सेम चीजें होती है versus complex arithmetic where you have to apply your brain's concept formulas or a mix of formulas that you can use. Okay, try the next one. Now, these are farmers here who are trying to stage a picket in an effort to do something. अब देखो, फार्मर्स का एफर्ट ऐसा थोड़ी होगा कि उन्हें विरिलिटी दिखानी है। विरिलिटी मतलब मैस्कुलिनिटी, तो वो मर्दानगी दिखाने तो नहीं आएंगे वहाँ पे। कर्व द प्राइजेस दैट कैन बी लेटर ऑन, बट स्टार्टिंग में उनको प्राइजेस कर्व नहीं करने हैं, उनको बेसिकली प्रोटेस्ट करना है सो दैट दे मेक देमसेल्व्स हर्ट। Try the next one. Okay. The answer here will be in principle, क्योंकि बाकी जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। एंड इन प्रिंसिपल में भी जो थर्ड वाला है दैट इज योर कॉलेज का या स्कूल का प्रिंसिपल। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इन प्रिंसिपल, नॉर्मल। नेक्स्ट, यस, आपने जो यहाँ पे आंसर सोचा कि लेड हो सकता है, क्योंकि लेड यहाँ पे एकदम ही सही लग रहा है। यस, लेड हो सकता था, बट लेड वुड हैव बीन एन आंसर व्हेन एक्चुएटेड वुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट। बट क्योंकि वी ऑलरेडी हैव द वर्ड एक्चुएटेड, हेंस यहाँ पे आंसर आएगा एक्चुएटेड, विच इज टू मूव इनटू एक्शन। एंड लेड का एक अनदर मीनिंग इज ऑल्सो टू लिव। ओके, all right, try this one. The last fill in the blank. Okay. Now they have asked you a commercial success formula. What happens is इसमें ना आंसर आप सेकंड दोगे क्योंकि सेकंड आंसर सही भी है, but when they ask you a success formula, you are supposed to give them an idiom or a phrase as is. तो यहाँ पे आंसर will be buy cheap sell dear. Okay, which means कि सस्ता, वो उसका मीनिंग वही है जो सेकंड में दिया है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। बट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला बोला है तो आपको वो यूज करना है। यस, नाउ दिस इज ऑल्सो अ फिल इन द ब्लैंक, बस इसमें बहुत ज्यादा ब्लैंक्स है। आप अभी तक दो कर रहे थे, अभी इसमें चार आएंगे। इसे हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। सो नाउ ट्राई दिस। Okay. So at the time, the White House was a serene as resort hotel out of season. The corridors were empty. Okay. तो सबसे पहले it was like a resort hotel, right? तो resort hotel जैसे था, मतलब क्या वहाँ पे कोई आता जाता नहीं रहेगा। आउट ऑफ सीजन, रिसोर्ट होटल में आते जाते, बट आगे क्या दिया है? रिसोर्ट होटल आउट ऑफ सीजन। तो आउट ऑफ सीजन है मतलब वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर कोई आ जा नहीं रहा है मतलब वो एम्प्टी है, क्योंकि सीजन नहीं होता तब रिसोर्ट होटल में कोई नहीं आता। नाउ द corridors were dash. Now the corridors were dash मतलब corridors were empty in various offices dash grey men. तो यहाँ पे आएगा क्वाइट ग्रे मैन। स्टेंटोरियन का मतलब है लाउड। ओके, बट रिसोर्ट होटल है, आउट ऑफ सीजन है, तो थोड़ी ना वहाँ पे शोर शराबा होगा। मतलब रिसोर्ट होटल है नहीं, रिसोर्ट होटल जैसे उन्होंने बोला है।
तो ऑब्वियसली क्वाइट ग्रे मैन. Apparently, his temper was easily set off. ये तो बहुत easy था. He scowled when he dashed the corridors. Now these are the other meanings. Pulverized is to demolish and prowl is to search something. अभी वो गुस्से में थोड़ी ना कुछ ढूंढेगा. तो he paced. गुस्से में वो ऐसा गुस्से से चल रहा था. तो paced. Okay. So these are the answers. I hope you have no doubt here. Now. The next up is word usage. When I say word usage, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो पास है ये हर जगह यूज किया गया है, बट कहाँ पे उसको ऐसे यूज किया है कि उसका मीनिंग गलत निकल रहा है. ओके, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सॉल्व दिस. All right. She did not have passing marks. तो ये तो सही है. The mad woman was cursing everybody passing her. अभी passing her ये गलत हो गया. यहाँ पे एक preposition की जरूरत है passing by her. That is why this one is the wrong one. Now next one is bold. Similar way में आपको solve करना है. Try करो. Okay. So यहाँ पे second is wrong again. As he could not move, he made a bolt. अभी bolt का मतलब ही होता है भागना. तो if he could not move, how did he make a bolt for the gate? वो भागा कैसे? So answer will be second. Now in the next one you are supposed to tell कि कहाँ पे क्या मीनिंग यूज किया है. जैसे मेजर है तो मेजर के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. ओके, कोई एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया उसे भी मेजर बोलते हैं. कुछ गिन लिया उसे भी मेजर बोलते हैं. ओके, जो वेट्स होते हैं उसे भी मेजर बोलते हैं. तो आपको बताना है कि कौन से इसमें उसका करेक्ट मीनिंग यूज किया गया है. चलो ट्राई. ओके, लेट्स सी. नाउ आंसर हियर विल बी 3. सो जी में जो बोला गया है द मेजर was 22 yards. It is something that can be found by measuring. तो मतलब बेसिकली वहाँ पे ऐसा पट्टी लेके नापना पड़ेगा तब आपको समझेगी कि अच्छा ये 22 yards है. तो दैट इज व्हाई इट इज ए. नेक्स्ट एच में रमेश uses a measure to take out 1 liter of oil. So this is a standard vessel. फिर आता है ई. मेजर वॉज इंस्टीट्यूटेड मतलब एक स्ट्रिक्ट एक्शन ली गई थी. एंड देन कम्स योर ई. एफ. Sheila was asked to measure each item that was delivered. So which means that she was asked to ascertain कि बराबर है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. So that is why answer will be 3. Try the next one. Okay. Now यहाँ पे the answer will be 5th. He is saying Dinesh felt bound to walk out, which means he felt obliged कि अभी तो मैं यहाँ नहीं ही रुक सकता. So answer is A. Then is G. Vidya story strains the boundary. यहाँ पे हम boundaries की बात कर रहे हैं. फिर आ जाता है H. Bound for a career in law. So he knew where this moved in a specific direction. So एक specific उसे पता था कि okay this is what I'm going to do. That's why it is right. And next is F. Buffeted by contradictory forces, he was bound. मतलब ये तो होना ही था. तो it was destined or certain to be. Okay. So these are the answers. Now the final thing is about word usage. तो वो आपको ना word use करके दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे word use किया जाता है और फिर आपको meaning पूछ रहे हैं. It's as good as synonyms जो आप स्कूल में करते थे.
बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो आपको वर्ड में यूज भी करके दिखा रहे हैं. सो ट्राई आउट दिस वन. ओके. So यहाँ पे portent means bold, which means to indicate or signify. So it appears that to many कि US का जो war on terrorism है, it is indicating trouble. मतलब उससे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ तो गल्फ वालों को ट्रबल होने वाला है इनका टेररिज्म के वॉर के वजह से. So that's why answer will be fourth. Next, last. Okay. Here, the answer will be harsh criticism. The police officer appears oblivious to the dishonor or harsh criticism that has been generated by his blatantly partisan conduct. So, answer will be harsh criticism. Alright, that is all about the vocabulary one. So, हमने vocabulary one में अलग-अलग type के questions solve किए. Odd one out, analogy, fill in the blanks, fill up and close stressed, word usage, match the following. Everything we have solved. So make sure that you revise this and आपके pink vocabulary book में से आप इसे solve करना. That is all for this session. Bye.